Good afternoon, students. Let us discuss tense. Tense is very important for narrations, for voice, for verbs, how to use the verbs, because tense means time and time is denoted by different forms of verbs, right? So let us start tense. First is that I'm not going to speak in a traditional way. I will speak something in a different way. I think you'll be able to understand that is how to use what are the applications of tense. So let us start with the four types and kinds forms of tenses. So you know that tense means time, right? And time is denoted by different forms of verb, right? And verb is there two types of verbs, helping verb and main verb. And helping verbs are 24 and main verbs are uncountable. Okay? And helping verbs have two forms, present first and second, or present or past. Main verb have three forms. First is past, present, and past participle. Right? Present, past participle. This way also you can remember. Right? So this shows an action and time as well. And these verbs are used for person and time, right? And status, right? So let us see how verbs are used. First of all, you should know that there are three forms of time. That's a present, past, and future. Right? This is present. This is present. Okay? And this is past. And this is future. This is future. This is past. And this is present. Now, for present, there are four for there are four types of tenses. Number one is that's a indefinite, indefinite, or simple, same thing, simple. Number two, continuous. Number three, perfect. Number four, perfect continuous. Right? So this way we will learn present, right? Simple present. How will we learn simple present, right? Then present continuous, then present perfect, right? Then present perfect continuous. Then come to past. For past, we will discuss this way. That's a past. So that is for past. We will discuss it this way. This uh, past indefinite, okay, then past perfect, right? Sorry, past continuous, right? Then past perfect and past perfect continuous. Then future indefinite, right? Future continuous, future perfect, future
perfect continuous tense. I am not going to speak too much. I'm going to speak a very simple. First of all, that's a present indefinite. Present indefinite. Indefinite. Or present simple. Though it's simple, but this tense is used almost for 50-55% uh, discussion is done through this simple present tense, right? And formula is also very simple. That is first form of verb plus subject. See, common structure is that's a subject plus verb plus object. So important thing is that's a form of verb. So here for simple present tense, right? Simple present tense, we take first form of verb. Example, I make videos. Example is I make videos, right? So here make is the first form of verb, right? This is called simple present tense. Important thing is that where to use simple present tense. So whenever you read sentence where every day, right, or simple, I tell you that simple present tense is used for truth, for truth. Simple present tense is used for truth, general truth, scientific truth, universal truth, any kind of truth or facts. Because facts and truths cannot be changed, and that is why simple present tense is used for truth and facts. Number two, simple present tense is used for habit, for routine, right? For recurring movements, for commentary, right? So, for all these purposes, we use simple present tense. Structure is very simple for simple present tense. That's a, I told you that's a subject, verb, and object. This is a simple order we follow for English sentence. So, here important thing is that first form of verb, so you don't have to bother if you have good idea about verbs. So then 50% English you can speak comfortably, you can write comfortably, right? So this is example, many example I can discuss. That's I write poems, right? She writes she writes articles, right? So here you have noticed one thing. Here I write, right? I write, we write, they write, because I follows plural rules. So that is why no s in verb. But here she writes s, and s represent present tense and singular subject, and subject is singular. That's why for making verb singular we have to put s. An interesting fact is that when you put s with the noun it becomes plural, right? Book, books, right? Than pen, pens, fan, fans, school, schools, right? But when you put s with the verb it becomes singular. Goes, writes, speaks, right? Why? This is the fact. The grammar is actually traditional. Sorry, grammar is, that is, you have to, the, that is arbitrary. So we cannot have argue why uh, s is uh, s is added
for singular present tense and singular subject? We don't know, but we have to remember, we have to cram, we have to imbibe the rules. And rule says that s is added when we use singular, subject must be singular and present tense, right? So third person singular, for third person singular subject, we add s in the verb. This is the rule, right? Okay. But for plural, we remove s. Here they go. Then we write no s. Then uh, Mohan and Meera speak, because plural subject हो गया. So this is very important. But yes, habits. This is simple present tense is used for habit. Simple present tense is used for routine. I get up early in the morning. She gets up early in the morning. My mother gets up early in the morning. My neighbors generally get up early in the morning, because plural subject, neighbors, right? My friends go for walk in the evening, friends, right? So it's a plural. And as noun becomes s, means plural, remove s from the verb. बस आप ऐसे याद रखो कि नाउन में जैसे ही आपने s लगाया तो वर्ब में s नहीं लगेगा for simple present tense. But the moment you use s in the with the verb, then there is no s in the noun. तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट है. अगर प्रेजेंट टेंस, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट, इफ वी टॉक अबाउट प्रेजेंट टेंस, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट्स एक्टिविटी विच यू डू, राइट? तो अगर आप करते ही रहते हैं, वो काम होता ही रहता है, ट्रूथ है, फैक्ट्स है ना, रूटीन है, तो याद रखें कि अगर नाउन प्लूरल है, नाउन में एस लगा है, तो वर्ब से एस हटा दो. अगर नाउन यहाँ है सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल से मतलब है मेरा. और अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब में आपको एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी सिंगुलर बनाने हैं. इसको दूसरे तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर नाउन और ये है वर्ब, है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करते हैं हम नाउन और प्रोनाउन पर, नाउन और प्रोनाउन, है ना. तो अगर ये सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर है मतलब वन है, तो आपने क्या लगा दिया यहाँ पर, यहाँ वन बनाने के लिए आपको एस ऐड करना पड़ेगा. पर अगर ये टू है या मोर देन टू है, तो यहाँ से एस वर्ब में से रिमूव कर देना. तो दोनों ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना, जब आपको ये एग्रीमेंट करना है कि सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो प्लूरल बनाने के लिए, यू हैव टू रिमेंबर दैट इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, तो प्लूरल सब्जेक्ट में कैसे बनता है, एस से बनता है. पर इसमें वर्ब कैसे बनती है, एस को हटा के, है ना. तो मतलब फाइनली मैं ये कहूँगी कि दोनों ऑपोजिट है. अगर सब्जेक्ट में एस लगा है तो वर्ब से एस हटा देना. अगर वर्ब में एस लगा रहे हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा. तो दैट्स इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. नाउ मूविंग टू सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट टेंस मतलब कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. मेन वर्ब आई एम टॉकिंग अबाउट. अभी यहाँ मैं मेन वर्ब की बात कर रही हूँ. मेन वर्ब है ना, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, वेयर टू यूज, लेट अस डिस्कस विद द टाइम लाइन. दिस अ प्रेजेंट टेंस, राइट, एंड दिस इज द पास्ट टेंस. तो सिंपल पास्ट मतलब द एक्टिविटी विच इज डन समवट हियर, कहाँ, यहाँ कहीं हुई है ना. तो यू हैव टू यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. तो then when you mention second form of main verb, then keep in mind what I'm telling here. you have to you have to use time frame,
right? Adverb of time. When did it happen? You have to tell. Otherwise, sentence grammatically it will be wrong. Example, if you say that I wrote, I wrote, sorry, I wrote, I wrote this poem, wrote this poem. So then this is incomplete sentence. Then you have to tell in 2023, right? That completes the sense because you have written this poem not now, somewhat here. So at what time, right? So sentence, I wrote this poem when I was in 12th standard, maybe. In 2023, maybe. It's fine. According to context, you have to write the time phrase. That is the rule of simple past tense. And simple past tense is used when activity is done somewhat in past, right? So that is simple past. That's a very simple. Important thing is here you have to remember whenever you read the sentence which says about time phrase, so then always keep in mind that sentence will be of simple past tense and you have to use second form of verb. Now come to the simple future, right? So simple future is, that is future indefinite, which is also called future indefinite. Future indefinite is, that's a future indefinite, right? So future indefinite is what? Future is denoted by helping verb. Here we have to use helping verb. In first a simple present, simple past, we didn't use helping verb. But here for future, you have to use helping verb, either will or shall. And will and shall are the helping verbs which are models. है ना? Models are will, shall, may, can, right? Models, the structure of model is subject, then model, and model is always followed by first form of main verb. So here you have to use first form of main verb. General notion is that suppose there are three forms of verb: first, second, and third, right? So first is, suppose first is present, second is past, and third is not future, mind you, third is past participle. Past participle. What is past participle? I tell you later. So here we are using will or shall for future. So as we use will or shall, and will and shall always followed by first form of a present tense. So that is not present because we are making it future with the will or shall, right? So future indefinite or future indefinite or future, sorry, future indefinite, right? So which will be will or shall, right? Okay. Simple future you can say. Sentences: I will provide study material, study material to you. So here future tenses will provide, right? Now mind you that will or shall, using will or shall, don't bother about singular or plural. We don't have to bother about the number or subject singular or plural because will or shall are used for both. Now the difference between will and shall.
So please take care, because will and shall are very common now. Will is very common verb which frequently use for many sentences. Shall is very less modern. See, you know that language is the matter of flux. It keeps on changing. Language is not static. By the time forms, grammar rules, words, new words, day by day, it's a very gradual process, but language changes. Language is not fixed, it's not static. So if you go back in 17, even in 18, early 18th century, and then if you see literature part or any text, so then they use very cautiously, they use will or shall, and they make a rule for shall and will, right? But by the time, the difference between will and shall is almost obsolete, almost that boundary is broken up, right? So nowadays will is very common for singular, for plural. Second thing is that if you go behind and you see that, so they authors and like in old text you read that thou, the, doth, right? But these words have been replaced by you, your, does. So language changes by the time. Okay. Now, simple future tense where to use when you are planning something, right? Okay, okay. Will I will do it. You don't worry. I will do it. Means in future. So future, uh, my teacher will call me in the evening. That's a future, right? So for simple future is very simple situation, right? We use when for future tense. So that is nothing special. So here I cover simple present, simple past, and simple future. Simple present, I told you that simple present is used for habits, recurring movement. Recurring movement means the earth, the earth revolves, revolves around the sun, around the sun, right? So that is recurring movement because it happens once. It's I don't know when earth was made, then from that time, and it will be uh, continued in future. So that is recurring movement, again and again, and since long time, and then it will continue whenever this earth is will be existed, right? So that is the earth revolves around us, and this is the truth, and truth never finish, right? So that is why truths are truths, right? Facts are facts, never finish, right? Never change. And that is why for such statement we use simple present tense, and structure is subject plus first form of verb, and sometime object. Object is obligatory, sometime we use, sometime we don't use. Okay, now, so simple present, simple past, I told you simple past should cannot be used without time frame. We have to use the time that I joined this college in 2010, for example. So that's a time phrase I have to use. I join or we join, anybody. Mr. Mohan joined, right? So Miss I joined this college in 2010, right? So important thing is here also, please take a note that for past tense you don't have to bother for singular and plural. That is only for present tense, and that is third form, third person singular, right? We have to bother s with the verb or not, बस उसी का है वो, बाकी नहीं है. Here you don't have to bother for
second form of verb, main verb. You don't have to bother for singular. Join is the second form of main verb and can be used for singular and plural. But important thing is time phrase. You have to use the time phrase. हमेशा टाइम फ्रेज के बिना सिंपल पास यूज होता है. सिंपल फ्यूचर आई टोल्ड यू. नाउ come to next kind of sentence, that's a continuous. Continuous means which is in progress. In progress. What is progress? Progress is mentioned by the first form of main verb plus ing. Example: singing, right? Writing, playing, speaking, something. And which is preceded by helping verb, that is, am, are, was, were, be form. How? I tell you. Example: structure is subject plus helping verb, which is be form, right? Plus that is main verb first form ing plus object. Example is that she is, array, sorry. She is. She is preparing for the, she is preparing for the competitive exams. Or my mother my mother is preparing food, is preparing lunch, food, whatever, lunch, right? So here, what is the im- important thing? That's a present continuous. Present and continuous. You know that B form. What are the B forms? Is, am, are. These are the present tense. And was, were, future, right? And be, being, and been, right? These verbs we will, this is called be form, right? So that is simple. That's a present continuous. For present continuous we use is, am, are. Is for singular, am is used for exclusively for I, and are is for plural. So suppose my my teachers are coming tomorrow, right? Or my relatives are coming to Delhi tomorrow, right? Or many relatives are joining us tomorrow, something like this. Am, I am teaching you, I am explaining tenses, like this, okay? So that is present continuous. Now past continuous, that is simple. Past continuous, present continuous. Let me tell you one more thing for present continuous is am, are, right? And always followed by main verb first form ing, right? Now for past continuous, that is two verbs are there, was and were. Here I, with I, past tense is was. So was or were, and main verb first form plus ing, right? This is for past continuous. So I was going market. Is it in complete sentence? No. Why? Because I was going market at what time? I am going market, yes, you can see me. But I was going market when
you were calling me, when you were calling me, है ना? अरे सॉरी, आई कुडंट पिक अप योर कॉल, ऐसे कहते हैं ना, मैं मार्केट में थी, तो आई वॉज गोइंग मार्केट, और आई वॉज आई वॉज रीडिंग, आई वॉज ऑन द वे व्हेन यू वर कॉलिंग, यहाँ दो बार सेंटेंस you were calling, so you were calling, that is also continuous. I was going, that is also continuous, but in both the situations, that's a past tense, was and were. You know that you is followed by were, है ना? क्योंकि यू सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए होता है, इसीलिए इसमें वर यूज करते हैं, इसमें वॉज। तो ये तो आपने चाइल्डहुड में पढ़ लिया, राइट? सो दैट इज कॉल्ड, this is called uh, past continuous. Past continuous means, uh, if I say that I was cooking when uh, when they were talking, then when they were leaving for the college. So I was cooking when they were they were leaving for college, ऐसा. So time, you have to, for all past tense, you have to tell the time, at what time this happened, either through time, through day, through date, through time, right? But you have to phrase, but you have to tell the time. Now, future continuous. So future continuous. So here you have to use two helping verbs, will or shall and be. These two, either will or shall and be. This is the mindset you should be very much clear when you are using future continuous. So when to use future continuous? Means the activity which will take place in future, right? Which will be continuing in future. So uh, you will be calling, right? When you reach, then you will be calling this way. So that's a very less use. I don't speak here, otherwise you'll get confused, but this is structure. I am going to speak one sentence. I am telling you, I will be I will be reaching home at this time, at this time, means tomorrow my train will be reaching, right, at this time. मैं कल इस समय घर पहुंच रही होंगी, ऐसे यूज़ करते हैं। पर इसको अभी मैं ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये यूजुअली हम सेंटेंसेस में अपने डिस्कशन में कम यूज़ करते हैं, राइट? सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. And then one more tense, that is perfect. Perfect. So that's a present perfect, past perfect and future perfect, है ना? Future perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट तो मैं आपको खास खास बता रही हूँ. प्रेजेंट परफेक्ट, राइट? सो प्रेजेंट परफेक्ट इज, ये टाइमलाइन है. दिस इज प्रेजेंट, एंड प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज व्हेन पास्ट टचेस टू प्रेजेंट. आई एम रिपीटिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई स्टेटमेंट. Present perfect means this is the present and this is the past. So when past touches to present, कहीं ना कहीं ये इसको टच करा अभी अभी, राइट? तो दैट्स अ जस्ट और रिसेंट. प्रेजेंट परफेक्ट को आप ऐसे समझो, प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स perfect means इसको दो वर्ड्स कीप इन माइंड. When sense like just now, you can say just now or recent.
तो आप समझना वो सेंस अगर आ रहा है तो दैट इज द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। कैसे? आई हैव फिनिश माई बुक। आई हैव finished my book means my activity was done. That is somewhat here. This is present tense and this is future but not too much old. अभी अभी finish हुआ है ना? Perfect मतलब that is the indication of recent, कि बस मेरी बुक अभी अभी फिनिश हुई है। वो कंटेक्स्ट कुछ भी हो सकता है। वो अभी अभी फिनिश हुआ है तो 1 साल के अंदर हुआ है, 1 मिनट के अंदर हुआ है, 1 घंटे के अंदर हुआ, डिपेंड्स वो क्या सिचुएशन है। बट दैट इज परफेक्ट टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा, कंफ्यूजन कहाँ होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में और सिंपल पास्ट में। अगर आपकी टीचर क्लास में आ गई और आप फ़ोन में अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो तो आप क्या कहोगे? आपकी टीचर क्लास में आ गई मतलब वो अभी अभी आई है। पर कई बार हम कहते हैं माई टीचर केम, है ना? तो अगर ये एक्टिविटी अभी अभी हुई है तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए? द टीचर हैज़ कम, द टीचर हैज़ कम। पर हम कई बार कह देते हैं कम को, हैज़ कम की जगह वी यूज़ द टीचर केम। केम मतलब वो इधर कहीं आई थी, तो केम व्हेन आई वॉज टॉकिंग टू यू, वो तो पास्ट टेंस हो गया। पर टीचर अगर अभी अभी आई है तो दिस इज द परफेक्ट सिचुएशन। यू हैव टू यूज माई टीचर हैज़ कम, आई कॉल यू लेटर। आई आ गई, अभी अभी आई है। तो दिस इज द डिफरेंस यू शुड अंडरस्टैंड। मैंने बोला येस माई आई हैव फिनिश माई वीडियो, अभी अभी जस्ट नाउ हैव फिनिश्ड, है ना? आई हैव फिनिश माई वीडियो। मैंने बोला आई हैव कम फ्रॉम वॉक, इफ़ यू विश टू join me you can, right? I have come from the walk. So I have come means recently I have come, right? So this difference you should understand. I said I came from the walk, so then at what time? Yesterday I came from the walk, or morning I came from the walk early because I was waiting for you. So that came is simple past, याद रखना। पर अगर recent है तो that is called present perfect। present perfect and present perfect means has for singular, have for plural, and always third form of main verb। ये बहुत important है कि has, have और had always followed by third form of main verb, है ना? कहाँ यूज़ करते हैं? जब कोई एक्टिविटी आपने फिनिश की हुई है अभी अभी, रिसेंट, है ना? वो कंटेक्स्ट क्या है, यू हैव टू डिसाइड। मैंने बोला आई हैव फिनिश माई 500 वीडियोस, यानी अभी अभी ख़त्म हुआ है। मैंने बोला आई हैड फिनिश्ड माई 500 वीडियोस, तो मुझे बताना पड़ेगा लास्ट ईयर, 2 months बैक, समथिंग। तो दैट इज आई हैव मीन्स recently. So that's a use of present perfect tense. Now come to the past perfect. Past perfect, अब यहाँ पे we have to discuss two things. Past perfect is used for the activity which is done in past but two activities done in past. Then we have to use past perfect for older. ये बहुत important, very very important. Listen carefully. For older activity, if two activities are in the past, then we have to tell which activity happened earlier and which is later. दो एक्टिविटीज़ हुई, दोनों पास्ट की हैं, तो एक जो है वो सिंपल पास्ट है और एक है जो वो पास्ट परफेक्ट है। और पास्ट परफेक्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज हैड, है ना? तो दोनों एक्टिविटी यहाँ कहीं हुई है। ये एक्टिविटी जो है वो हुई है यहाँ पे, ये वन पहले ही हो गई। ऐसा कैसे? बड़ा कॉमन सेंटेंस इज दैट
When I reached the station the train had left, ऑलरेडी लेफ्ट, कुछ भी बोल दो आप। तो व्हेन आई रीच द स्टेशन, आप लेट गए, आपका जाना बाद में हुआ, द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो याद रखिए पास परफेक्ट एक ही वर्ब है इसके लिए, हेड, और हेड हमेशा अर्लियर एक्टिविटी के लिए, और लेटर जो लेटर पास है, बाद वाला पास है, उसके लिए सिंपल पास। एग्जाम्पल मैं इसको क्लीन करके देती हूँ आपको। एग्जाम्पल इज बहुत कॉमन, व्हेन आई रीच द स्टेशन, रीच्ड द स्टेशन, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट। अब यहाँ पे ट्रेन पहले ही जा चुकी है, आप जब पहुँचे तो द ट्रेन हैड, सॉरी मैंने हैड लिखा है नहीं, हैड लेफ्ट, तो ट्रेन तो पहले ही जा चुकी है। तो ये वाली एक्टिविटी क्या है, ये अर्लियर पास है, ये अर्लियर पास ये हो चुका, और आपका जाना बाद में हुआ। तो याद रखिए कि जो पुराना पास है, मैं उसको सिंप्लीफाई करके बताऊं, कि जो पुराना पास है वो इधर है ना, ये नया पास है, ये सब नया है, ये नया है, ये उससे पुराना, ये उससे पुराना। तो जो पुराना पास्ट है अगर आप, तो वो किस में आएगा, वो हेड में आएगा, बस आप ऐसे याद रखो। और जो नया पास्ट है वो सिंपल पास्ट टेंस, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म। कैसे, आई आई हैड finished my work, then I started poem। ऐसे भी बोल सकते हैं, फर्स्ट आई फिनिश्ड माई वर्क, देन आई स्टार्टेड, देन। तो फर्स्ट आई हैड फिनिश, क्योंकि पहले मैंने अपना काम ख़त्म किया, फिर पोएम लिखना स्टार्ट किया। तो इस तरह से दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पास परफेक्ट, है ना। फ्यूचर में अभी नहीं बताऊंगी, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं, उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अब इसमें मुझे दो और बताना है आपको, फ्यूचर सबके बाद में बताऊंगी। दैट इज नेक्स्ट टाइप, दैट्स अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। अब इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट है मतलब हैज़ और हैव, कंटिन्यूअस है मतलब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो कैसे हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा, आप इसको सिर्फ ऐसे याद रखो, कोई भी एक्टिविटी जो प्रेजेंट में भी है, पास्ट में भी हुई है और फ्यूचर में भी चलेगी, है ना। तो जब तीन टाइम एक साथ मिलते हैं तो आपको आप यूज़ करते हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। कैसे, अगर आपने कहा आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 7 o'clock, सिंस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर आप टाइम बिल्कुल फिक्स बता रहे हो, तो जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो सिंस यूज़ करते हैं। अगर आप यहाँ कहते फॉर, तो आप कहते फॉर मॉर्निंग, मतलब एक टाइम फ्रेज दे दिया कि मैं करीब करीब सवेरे से आपका वेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है बीन वेटिंग, ये याद रखना, हैव बीन वेटिंग, है ना, क्योंकि हैव तो आप आई के कारण लगा रहे हो। शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 7 o'clock, राइट। शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, क्योंकि वो पक्का नहीं है पर करीब करीब 2 घंटे से। लेकिन फॉर 3 o'clock तो वो टाइम फ्री है, तो फॉर नहीं लगाना, फिर सिंस 3 o'clock। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेंस, इसको अच्छे से समझना, अच्छे से। अभी इसकी एक्सरसाइज बताऊंगी, रूल सुन लो, नेक्स्ट वाला स्लाइड में एक्सरसाइज भी करके दिखाऊंगी आपको। तो ये है, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। बड़ा लंबा लंबा सा नाम है, और ये लंबा क्यों है, क्योंकि प्रेजेंट,
है ना। परफेक्ट मतलब यहाँ कहीं, कंटिन्यूअस मतलब फ्यूचर में, तीनों मिल रहे हैं। और उसके लिए तो आप सिर्फ ये याद रखो, हैज़ या हैव तो लगाना ही है, सिंगुलर प्लूरल। और बहुत इंपॉर्टेंट है बीन प्लस प्लस वेटिंग, है ना, राइटिंग फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, आई हैव बीन वेटिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर या सिंस। फॉर एक टाइम फ्रेम, जो एक जनरल टाइम, करीब करीब जिसको हिंदी में बोलते हैं, और सिंस शार्प टाइम के लिए, है ना। ये डिफरेंस समझ लो। अब इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कैसा होता है इसका? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो एक्टिविटी यहाँ कहीं इतने लंबे समय तक चली, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बोलते हैं, क्योंकि वो पास्ट में ही हो रही है। लेकिन वो कहाँ से हो रही है? जैसे कि आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर फॉर 2 days। मैं आपका 2 दिन तक वेट करता रहा। हम हिंदी में ऐसा बोलते हैं, मैं आपका 2 दिन तक वेट, आपने वेट करना यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक करते रहा, तो हेड लगा दिया, क्योंकि ये पास्ट टेंस की एक्टिविटी है। और फॉर यहाँ पर दोबारा फॉर क्यों लगाया? क्योंकि 2 दिन, करीब 2 दिन तक, है ना। आप यहाँ सिंस कब लगाते? आप सिंस यहाँ लगाते जब आप कहते कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था सिंस, है ना। और जैसे ही सिंस लगाया, तो ये वाला जो फ्रेज है, ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर आपको फिक्स टाइम बताना पड़ेगा कि आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 5 o'clock। तो सिंस 5 o'clock। अभी से आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 5 o'clock, मतलब यहाँ कहीं मैं 5 बजे तक कल तुम्हारा वेट करता रहा, तुम आए ही नहीं, तो मैं आ गया, है ना। तो आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 5 o'clock, देन आई लेफ्ट फॉर दिल्ली, जो भी है ऐसा। तो ये टेंसेस है। टेंसेस का इम्पोर्टेंट मैं रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है ये, लेकिन इसके एक्सरसाइज जब आप करोगे तो आपको समझ में आएगा। पर हाँ, पास्ट टेंस के लिए याद रखो, कोई भी पास्ट टेंस की बात करते हो, टाइम फ्रेज आपको बताना ही बताना है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, उसमें आपको सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट, कभी भी मिस्टर राम, मिस्टर शर्मा, मोहन, कुछ भी लगाते हो। आप बर्ड्स की, एनिमल्स की, अगर आप ट्रीज़ की, प्लांट्स की, बेबीज़ की बात करते हो, और वो एक ही पर्सन की बात करते हो, तो वर्ब में एस लगाना है प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस कभी भी यूज़ करो तो टाइम फ्रेम ज़रूर बताना है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इनके लिए याद रखो ये बड़े लंबे से हैं, और इसमें बीन वेटिंग, बीन वॉकिंग, ऐसे करके आपको लगाना पड़ता है। और फॉलोड बाय सिंस और फॉर। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 7 o'clock, है ना। तो टाइम, सिंस मतलब शार्प टाइम, एस से एस याद रखो, और फॉर मतलब जनरल टाइम। तो ये एक बहुत जनरल मैंने आपको आइडिया दिया टेंस का। सो थैंक यू सो मच। एंड इफ़ you have any kind of sentence you can share with me, I'll give you reason and explain you with the other examples. So thank you so much. God bless you.